Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. So you can see the slide also. I started on with Patanjal Yoga Sutras, learning of Patanjal Yoga Sutras because of my father, Swami Anand Rishi. Many of you must be knowing that he has written a book on Patanjal Yoga Sutras in Marathi and also in English. And I was lucky enough because he used to take me granted and I used to do some proofreading for him. So I've been with him in the learning of this Yoga Sutras since then. That time I didn't know the importance of these Yoga Sutras and all that. But by and by, when I started learning yoga and all these therapies which you are seeing, I have learned all these therapies and I teach also all these therapies. So by and by, when I started doing actual sessions on all these sessions, like past life regression, sound healing, swara yoga, dreams, working on dreams, family constellation, inner child, and all these things, we started taking interest and doing some experiments, experimentation on self. I could understand the sutras more in a more and more deeper way. And then I thought, I want to give this a thought that because my interest is Ayurveda also, my interest is voice, and my interest is yoga. So Patanjali also has all these interests. I am Maharshi Patanjali. So first, let me pray to him before beginning with whatever I am going to tell. Let us take his permission to speak because this is the first time ever I am going to speak on Patanjali's Yoga Sutras. Yogena chittasya padena vacha malam sharirasya cha vaidhyakena yopakarotam pravaram munina patanjalim pranjaliranatosmi. And usually Maharshis like Patanjali are always with us when we are in such an intense session. It can be a theory session or a practical session also. Masters are always with us. So let us understand what past life regression is first. Past life regression is a therapy which is based on the theory of reincarnation, what we call as Punarjanmavad. It is also based on the theory of karma vipak, law of cause and effect, action and reaction, kriya pratikriya, whatever we call it. So both these laws, both these theories are very, very important when we talk about past life regression. And we can see in these pics, pehle anda ya pehle murgi. Huh? Like the swing, every action has an equal and opposite reaction, the swing which is happening. So these are some miracles happening in the universe. And so many Maharshis and seers, Darshankaras have tried to work out the theory behind all these things. And Vedas have given us the theory of reincarnation also and karma vipak also. But the detailings of it are different in all the scriptures. In different scriptures, it is given differently. So we are not sure as to actually how it works. Like theory of reincarnation, this is a picture about what Buddha has said. But is it exactly the same? When we actually take the experience of all these things, it is exactly the same. Let me tell you, it is not exact anytime. Okay, even if the best of the seers, best of the rishis have told something, we have to remember that every time they speak, they tell or they write, they are telling us, they keep on telling us that whatever needs to be told is beyond words.
and this world is ever changing. The laws remain same, but the way we tell the laws or we experience the laws keeps on changing every second, every minute. That is why the time when I experience something and the time I tell you something, even that time difference is not going to allow me to tell the truth, the real experience what I have. Also, the words are, all the experiences are beyond words, even simple experiences. Simple experiences like I just saw a rose flower. It smells so beautiful. It has a wonderful fragrance. And I want to tell you that I have seen a rose flower. How will I tell you? Unless you know about the rose flower, nobody is going to understand what the rose flower is. So I keep on explaining it is red in color, it has so many petals, but that is not going to give you any idea of what a rose flower is unless you have seen it. Okay. So we say that these are just pointers, whatever masters have explained. In one word, we call them as masters. Okay. All seers, rishis, maharshis, darshankaras, the brahmanas and everything together we use the word as masters. So all these masters are saying that these are just pointers. Unless you personally take experience, you are not going to understand what I am saying. And that is why we have to take the words of masters for sure, but we have to work on it. And very happy to see that Westerners, at one point of time, Indians were very enthusiastic in working, researching, प्रयोग करना हम जिसे बोलते हैं ना, खुद पे प्रयोग करना, नई नई थियरीज निकालना, इस पे इंडियंस माहिर थे. लेकिन इन बिटवीन 1000 और 2000 इयर्स क्या हो गया मालूम नहीं. मीन्स वैसे मालूम है, लेकिन मानसिकता को क्या ठेस पहुंची मालूम नहीं. लेकिन we have stopped researching. When research stops, the knowledge becomes stagnant. So जो भी दर्शनकारों ने, वेद शास्त्रियों ने जब जो भी नॉलेज दिया है वो स्टैग्नेंट हो गया है. And luckily, about 100 to 200 years, the knowledge has started reviving. But still, प्रयोग में नहीं आ रहा है जितना आना चाहिए. I'm very happy to see that Westerners are doing a lot of research on past life regression. The theory of reincarnation, Indians have been believing it since we know it. Okay, since we know about India. Westerners are not believing in theory of reincarnation, yet they are working on this theory. Yet they are actually doing some research work, objective research work in past life regression. And the first research was, of course, of Sigmund Freud, who was a neurologist, psychoanalyst. And when he did the research, he used it as a diagnosing method for his patients. He worked on what he called as the unconscious mind. And whatever age regression he did, which was used only and only for diagnosing, was psychic determination. That time he called it psychic determination. What we call it as past life regression now. Okay. And then came Carl Jung, whatever we pronounce it. And I've given the dates specifically because I want everybody to know that Westerners have been working on this since more than 160 years. And Indians, अपनी theory है reincarnation की, अपनी theory है कर्मा की, फिर भी हम इस पे काम नहीं कर रहे हैं. We are not doing anything. हम belief पे रुक गए हैं. We have जो विश्वास है हमारा, विश्वास पे रुक गए हैं. After belief, we have to work on it. After having a hypothesis, we have to work on the hypothesis, experiment on it,
and then come to conclusions of whether it is right or wrong. So we are not doing anything, but these people, Westerners, बहुत ही माहिर है ये लोग ये करने में. We should learn from them. So Carl Jung in 1871, he has done a lot of work, and whatever work he did was from the collective unconscious and archetypes also. And whatever past life regression therapy is present in Western world today is basically based on this Jungian style. Okay, of course it has developed a lot, but basically it is the Jungian style and not the Freud style. Roger Woolger, who just we were lucky to meet Roger Woolger on internet and speak with him. He worked on birthmarks, and they actually these people, what they do, people with birthmarks, they have researched. They went to past life. They saw what had happened and all. In every case, what they do is, luckily, they get people who are from World War and all that, who have birthmarks, and then they go to that place, check the records, and see if the past life death was in the life. Like, let me tell you the case, one case which I remember. Okay, that there was a person with a birthmark on his ear. If you can see it, he had a birthmark on his ear like this, a small hole in the top part of the ear. And he went to a regression therapist, of course, Roger Woolger. He saw a past life where in the World War II, he was shot in this portion, and the shot came out from the bullet came out from this side. Okay, but he had a mark only this side. But then Roger Woolger, diagnosed it in such a way that then he found that there was a small mark even this side. Okay, and then he went to the World War II section because this person was in the army there. He was shot by the Germans, and there was a wonderful record kept of the World War II fighters. And so they checked the name, the time of death, whatever is called, and it tallies exactly. Okay, and Roger Woolger has hundreds of such case studies which are validated. Okay, they validate the cases so well, and they come to conclusions. And now they are the people who have started believing in past life regression, though they may not say it openly also, but they have started doing this wonderfully. William Reich is another psychoanalyst who has done a lot of work on traumas. Okay, even present life traumas, he has worked on present life traumas and how to work on present life traumas, like operations and all. तो ऑपरेशन के बाद भी वो मन में भय रहता है, वो ऑपरेशन का whatever problem we have, वो मन में भय रहता है. The scar also remains. So William Reich has worked on all these traumas, and after working on these traumas, even the scars of the wounds of operations, surgeries go away. And so that is the sign that even in the mind, this disease is not remaining. Okay. So I say William Reich has done a lot of work. Carol Bowman has done a lot of work with children, and she has wonderful results. Hundreds and hundreds of cases are there about all these persons. Stanislav Grof has done a lot of research on womb experiences. That हमारे यहाँ अभिमन्यु की कथा है, लेकिन हम वो कथा मानते हैं खाली. We don't actually believe. Okay, or we can say that we only believe. हम we don't trust. But actually, Stanislav Grof has
proved it sort of that in the womb we can train people in the womb. Okay, so and we know everybody must be knowing Dr. Brian Wiss's name because he is one of the like though he's there now, he was not from a very old past, but he is the one who has made past life regression therapy really popular. Popularity has come from him. So he has a pioneering work in this field. And in India, there's Dr. Newton and Dr. Lakshmi from Hyderabad. And I have learned this therapy from them. And of course, in Thane, we have Samvad Center, which is doing this work. And we are doing a lot of research work also on past life regression therapy. Like research work with astrology, research work with EEGs, and we are doing this research work. And we have wonderful results, let me tell you. And now let us come to our Indian history, because past life regression is actually a subject of India, though we have forgotten it. Okay, so though all over the world in very ancient times, every civilization had something to talk about reincarnation, though it may be very vague, but India has a very very detailed study of past life regression. Mahavir and Gautam Buddha, both of them used Jati Smaran. They called it Jati Smaran. Okay? Jati means life and Smaran means remembering. So remembering past lives was one of the ways of their regular साधना. रेगुलर साधना में उनके ये रहता था. और ऐसा कहते हैं, सुना है कि दीक्षा देते थे वो जब, तो पहले पास्ट लाइफ रिग्रेशन करके ही, जाति स्मरण करने के पहले दीक्षा नहीं होती थी. द साधक हैज टू गो थ्रू मेनी रिग्रेशंस, पास्ट लाइफ देखने पड़ेंगे और बाद में ही उसको दीक्षा मिलेगी. तो दिस वाज द वे ऑफ द रेगुलर व्हाट टू से साधना पद्धति. और हमारे यहाँ उपनिषद, रामायण, महाभारत, भगवद गीता, योग वशिष्ठ, पातंजल, योग दर्शन विच इज टुडेज सब्जेक्ट, सब में पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बहुत सारे उल्लेख दिए हैं. बट वी व्हेरी रेयरली हम बिलीफ और एक काय म्हणायचं आपण गंमत म्हणतो ना, जस्ट मजा लेते हैं उसका. रीइंकार्नेशन थ्योरी का मजा लेते हैं हम खाली. we are not actually serious about it. Applied life sciences like Ayurveda, Yoga and Jyotish Vignan, all the three have ample references of past life regression. These are the two books on past life regression therapy. There are in Marathi, of course. So the Jati Smaran, Smriti Parishuddhi Yoga, this is by me. It's a very small book, but you may go through it. It has references about past life, about Patanjal Yogasutras in it. I have tried to explain in a very layman's language. I'm not an expert writer. I'm not an expert speaker. I'm not an expert in anything. फिर भी मैं बोलती हूँ क्योंकि आई फील दैट मेरे जो एक्सपीरियंसेस है वो मुझे शेयर करने ही चाहिए. तो जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला है कि नहीं आता है तो भी बोलना. बोबड़े बोल म्हणतो ना, छोटे बच्चों की लैंग्वेज रहती है, फिर भी वो बच्चे बोलते ही है ना, उनका एक्सपीरियंस पे बोलते ही है. वो निपुण नहीं होते हैं उसमें, फिर भी वो जो उनका एक्सपीरियंस है वो बोलते हैं. इट्स अ हार्ट टू हार्ट टॉक. सो मदर्स एंड ऑल दोस हु आर कनेक्टेड विद देम अंडरस्टैंड. वैसा मेरा एक छोटा सा प्रयत्न है हार्ट टू हार्ट टॉक का. it has many flaws in it, of course. Like as a writer it has many flaws because my father, ये जो बाजू का बुक दिख रहा है पुनर्जन्माचे गुड, my father was a very good writer. और मैं उनको बोलती थी मुझे आपके जैसा लिखने को क्यों नहीं आता है, तो वो बोलते थे तुम्हें जैसा आता है वैसे लिखो,
तुम जैसे हो वैसे ही रहो, तुम किसी मेरे जैसे बनने की कोशिश मत करना. You are good as you are. Like Osho has always told that you are always good. We have a unique personality. Don't compare yourself with others. And that is why I dare to speak. ये जो उन्होंने बोला है, मेरे पिताजी ने और ओशो ने बोला है, हमेशा बोलते रहते हैं. That's why I dare to speak, because not being an expert also, just sharing my experience, I feel it's a big thing. So now let us come to actual past life regression therapy also. Regression, what is regression? Regression means going back into our past memories. Every memory has an energy signature. हम चित्त वृत्ति बोलते हैं ना, चित्त में जो भी वृत्ति है, स्मृति रूप वृत्ति होती है, उसके एक एनर्जी सिग्नेचर रहता है. So, or there are patterns, what we call it as patterns. Patterns, energy patterns are there. And these energy patterns influence our current life, keep on influence our thoughts, keep on influencing our actions. They have a very strong pull, these energy patterns. And the PLR means past life regression. Relevant memories are retrieved, understood through PLR. Negative energy patterns, whatever is unwanted, जो भी श्रेयस नहीं है, अश्रेयस है, उसको श्रेयस हम बनाते हैं. It is energy. Remember, energy is convertible. Electrical energy is convertible to mechanical. Mechanical can be converted to chemical energy. कुछ भी, and at energy level, conversion is very, very quick. New understanding is assimilated in the present life. तो पास्ट का ये सब एनर्जी पैटर्न्स जो है, मेमोरी के जो एनर्जी पैटर्न्स है, we first retrieve the memory, we go in the memory and then we work on the memory. और वर्किंग करने में वो जो पैटर्न है वो चेंज करते हैं. फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या है पैटर्न, कैसा है, ये क्यों बना, उसका असर कैसे होता है हमारे ये लाइफ पे. तो व्हाट टू डू, द डूज एंड डोंट्स, हम ये बदल सकते थे क्या, तभी बदल सकते थे क्या, तभी नहीं तो अभी बदल सकते हैं क्या. तो वॉट एवर वी कम टू कंक्लूजन्स, so that transcendence starts happening in past life regression. And the process through initially it started with hypnotic sessions in the western style, okay, but हमारी जो इंडियन मेथड्स है, जो परंपरा से आई हुई है मेथड्स, those are all non hypnotic because they are meditative methods. क्योंकि हमारे यहाँ जाति स्मरण जो भी स्मृति परिशुद्धि या जाति स्मरण जो भी सिखाया है गुरुजनों ने, तो इट इज फॉर अ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट. तो अगर स्पिरिचुअल अपलिफ्ट, इट वाज नॉट यूज्ड एज अ थेरेपी, इट वाज यूज्ड एज अ स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट. तो स्पिरिचुअल संचित कम करने के लिए रिग्रेशन थेरेपी करनी है. To understand past lives and present life, it is used. To understand the life purpose, it was used. So इसलिए हम awareness is a very important underlining factor. You have to be aware in seeing those memories. इसलिए हमारे यहाँ hypnotic पद्धति से नहीं होता था, पहले भी नहीं होता था. And I'm happy to say, though I've learned all hypnotic methods and all, इन पास्ट लाइफ रिग्रेशन हम संवाद सेंटर में नॉन हिप्नोटिक मेथड्स ही हमेशा यूज करते हैं. बिकॉज द होल पॉइंट ऑफ रिग्रेशन थेरेपी इज आई हैव टू चेंज, माय बिहेवियर शुड चेंज, माय प्रॉब्लम्स शुड चेंज. ओके, सो दैट इज व्हाट इज द होल पॉइंट. तो हिप्नोटिक में टेम्पररी गेन्स होते हैं, नॉन हिप्नोटिक में एवरलास्टिंग गेन्स होते हैं. आमूलाग्र बदल हम जिसे कहते हैं वो नॉन हिप्नोटिक में होता है. And that's why I always prefer, and masters have always preferred non-hypnotic techniques. और guided meditation से भी और खुद के meditation से भी हम खुद करेंगे तो भी regression होता है. And usually spontaneous recall, what we call, happens in meditations. Many people see past lives spontaneously. किसी को समझता है कि ये past life है, किसी को नहीं समझता है ये past life है. That is different. लेकिन spontaneous recalls can come in meditations. So in regression therapy, what all includes in regression therapy?
एज रिग्रेशन विच इवन फ्राइड यूज्ड। हमारे प्रार्थना, हम डेली जो प्रार्थना करते हैं ना, हमें बोला है कि ये प्रार्थना करो, तो रोज का व्हाट टू से आढ़ावा लेते हैं पूरा। वी just go through the whole process of the day's work before going to sleep in the night. और ये हमने अच्छा किया है, overview of everything of the day's work, and that is what is age regression is. Okay, लेकिन it is of course on a deeper level. Future progression, regression past का है तो आगे का जो देखना है उसे progression बोलते हैं. So future progression भी हम कर सकते हैं in a similar way. पद्धति इससे, ओके, पास्ट प्रेजेंट लाइफ ट्रॉमास हम हील कर सकते हैं एट द मेंटल लेवल, डिप्रेशन जैसे केसेस एंड ऑल, एनी यू नेम एनीथिंग कैन बी हील्ड. जैसे मैंने बोला, सर्जरीज एंड ऑल रहते हैं, केमोथेरेपी लेते हैं, तो उसका केमोथेरेपी से कैंसर ठीक हो जाता है, फिजिकल कैंसर ठीक हो जाता है, लेकिन मन का कैंसर ठीक नहीं होता है और मन का ट्रॉमा भी ठीक नहीं होता है, वो फियर हमेशा रहता है. तो वी कैन हील प्रेजेंट लाइफ ट्रॉमास मन के स्तर पे. वी कैन ऑलवेज डू दैट, कनेक्टिंग टू वेरियस पास्ट लाइव्स लाइक ह्यूमन, एनिमल लाइफ टाइम, प्लांट लाइफ टाइम, मिनरल किंगडम. इतना ही नहीं, हम वी कैन कनेक्ट टू मल्टीपल डायमेंशंस ऑल्सो, बिकॉज वी हैव मेमोरीज ऑफ ऑल डायमेंशंस. ओके, हमारे पास सभी डायमेंशंस की मेमोरीज होती है. So we can connect to any dimension through past life regression. Womb experience ले ही सकते हैं. Rebirthing means the birthing process, हमारी जन्म की प्रक्रिया कैसे होती है बच्चों, how you feel during the birthing process, and there are many traumas which get stuck up in this birthing process. Okay, तो एक rebirthing करेंगे ना, तो एक्चुअली द्विज जैसी अवस्था हो जाती है हमारी. जस्ट वन रीबर्थिंग एंड वी आर कुछ अलग हम हो जाते हैं, बिहेवियर हमारा अलग हो जाता है, मेनी फियर्स आर ड्रॉप्ड जस्ट टू वन रीबर्थिंग प्रोसेस. चाइल्डहुड मेमोरीज, आई एम टॉकिंग अबाउट एज रिग्रेशन में भी चाइल्डहुड में जाते हैं, बट दिस व्हेन आई टॉक चाइल्डहुड, आई एम टॉकिंग अबाउट द मेमोरीज बिटवीन 0 to 5 years, जो हम यूजुअली वी डोंट रिमेम्बर दैट, लेकिन वो मेमोरीज में भी हम काम कर सकते हैं. देन लाइफ बिटवीन लाइफ, पिछले जन्म का मृत्यु हुआ है और ये जन्म का मृत्यु, जन्म इस जन्म में हम नहीं आए हैं, तो ये जो बीच वाला पोर्शन है, द टाइम लैग बिटवीन द पास्ट डेथ एंड दिस birth, that is life between lives. So we can go through so many dimensions in this process. We also see past life death. We can actually relive a past life death, understand what death is, understand what it is कि हमारे शरीर से प्राण बाहर निकलता है, तो शरीर को, मन को क्या होता है. वॉच द बॉडी, सूक्ष्म देह ऊपर जाता है और जड़ देह नीचे रह जाता है. वॉच योरसेल्फ फ्रॉम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस जैसा. लेकिन हम ये करते हैं, एंड जो हम अभिनिवेश बोलते हैं, ये अभिनिवेश 5-6 डेथ्स, तो हम अगर ऐसे देखेंगे डिटेल्ड में, तो हमारा अभिनिवेश तो निकल जाएगा. we'll never feel fearful about death. Now let us come to Patanjal Yogasutras. After understanding what past life regression is, I think I'll be in a better position to tell you what Patanjal Yogasutras are, because as I told you, I'm very bad at speaking. जो भी शब्द मुझे आएंगे वो शब्दों से मैं बोलती हूँ. Please excuse me for the mistakes I make in speaking. Okay. समाधि पाद, पातंजल योग सूत्र का जो पहला पाद है वो समाधि पाद है. At this point of time, before starting the samadhi path, I would like to tell everybody, I'm very happy to tell everybody, that in regression therapy, we meet masters.
और प्रत्यक्ष हम मास्टर्स का दर्शन कर सकते हैं। मीटिंग मास्टर्स, स्पिरिचुअल मास्टर्स इज लाइक इतनी एनर्जी, शक्तिपात जैसा हमें रिग्रेशन थेरेपी में हो सकता है। एंड वी हैव एज थेरेपिस्ट ऑल्सो एंड एज अ ले पर्सन ऑल्सो, मैंने बहुत बार मास्टर्स से ऐसे शक्तिपात लिए हैं। उनमें से पतंजलि एक है एंड दे आर वेरी हैप्पी टू मीट अस ऑलवेज। हम उनके दर्शन कर सकते हैं, हम उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। एंड जैसे मैंने वो जो बुक लिखा ना मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, और वो जो भी मैंने लिखा है वो सब हटके है। जो प्रचलित नॉलेज है पास्ट लाइफ रिग्रेशन का, उससे कुछ मैं अलग ही बोल रही हूँ। हाँ, मैं क्योंकि मैं तो अनुभव से बोल रही हूँ एंड आई एम कनेक्टिंग इट टू द सूत्रस। तो मैंने एक बार ये करते समय, once we do channeling, okay, channeling means we call masters and we ask them questions. तो मैं बहुत बार करती हूँ चैनलिंग, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आता है whether I am right or wrong, it is very always good to do channeling. तो मैं चैनलिंग मैं कर रही थी, और मैंने वो प्रकाशित पब्लिश करने के पहले पतंजलि जी उनको पूछा कि मैं जो भी लिखने जा रही हूँ, यू नो माई माइंड, यू नो माई अनुभव भी, और एम आई राइट, शुड आई स्पीक इट आउट? तो द आंसर्स विच पतंजलि गिव्स, हम जो संयम बोलते हैं ना, पतंजलि योगसूत्रास में 3rd चैप्टर में संयम बोला है। तो चैनलिंग में एक्चुअली वी डू समथिंग कॉल्ड एज संयम। ओके, I cannot explain what Sayam is, like others can explain, but that is what we do in channeling also. So when masters meet us, the Sayam में बोला है ना, we can have darshan of masters. So we can have, it is very easy. तो पतंजलि ने ग्रीन सिग्नल दिया है मुझे, और actually he seems to be very happy, and that is why I am very happy to tell you that उन्होंने ही मुझे गाइड किया. He guides me in dreams, okay? पतंजलि जी guides me in dreams. And पतंजलि ने मुझे गाइड किया कि तुम वो थ्योरी सीखो, because I am not a good speaker, I told you. I am not good at तर्कशास्त्र. I cannot, I am very bad in words, using words. तो उन्होंने बोला कि वर्ड सीखो ना, फिर बोलना है ना लोगों को, और बोलना ही चाहिए. नए प्रयोग हो रहे हैं, वो लोगों तक जाने ही चाहिए. लेकिन देन लर्न द वर्ड्स, एंड आई एम हैप्पी टू से दैट. इसलिए मैंने एमए योग शास्त्र सीखना शुरू किया है. और एक्चुअली वो वर्ड्स मिल जाते हैं बोलने के लिए. सो होपफुली वो बुक में जो लिखा है उससे मैं अच्छा बोल सकूंगी. तो योग समाधि पाद, पहला जो पाद है वो समाधि पाद. और ये सब जो पतंजलि जी ने कहा है वो योग सूत्र रूप में कहा है. Actually, I wanted to make one slide about sutra also. So my theory, when I started doing some research on this comparative study of past life regression and Yogasutras, my analogy was, ये सूत्र है, इसका मतलब ये थ्रेड में अगर फिलॉसफी आ सकती है तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन क्यों नहीं ये थ्रेड में हम डाल सकते हैं. तो ये जो सूत्र दिए हैं, ये सूत्र में ये सूत्र किसी भी क्षेत्र में हम यूज कर सकते हैं. एंड आई हैव यूज्ड इट इवन इन म्यूजिक. ओके, जैसे कि वृत्ति मीन्स वाइब्रेशंस, द म्यूजिकल वाइब्रेशंस, जो सुर है, स्वर ताल जो सर्प है, वो भी इसमें ढाल सकते हैं. तो ये तो सूत्र है, उसमें हम मणि कौन से डालेंगे वो हमारे ऊपर. तो फिलोसोफर्स ने फिलोसफी के मणि डाले हैं, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट ये मणि डालना भी गलत नहीं है. ये सूत्र ही यूज करने हैं, और ये सूत्रों में अर्थ जो अलग निकलेंगे. सूत्र आर होलिस्टिक इन नेचर.
holistic means like Pinda Brahmanda Nyaya. They work like Pinda Brahmanda Nyaya. You can apply these laws to any field of your knowledge, and they have to fit in exactly as it fits in philosophy. So that is what I am trying to tell about past life regression therapy. तो समाधि पाद है, तो पहले पतंजलि जी ने समाधि के ऊपर बोल दिया है कि व्हाट इज समाधि, चित्त वृत्ति निरोध. तो इन दिस पिक्चर वी कैन सी देयर आर मेनी वृत्तिस, और ये तो चलते ही रहेगा, चलते ही रहेगा. इट इज नॉट इन आवर हैंड्स. ब्रह्मांड में ये वृत्तियां होती ही रहेगी. नाद ब्रह्म बोलते हैं, नाद मीन्स एनी वाइब्रेशन. तो ये जो ब्रह्म है वो ये वाइब्रेशंस तो होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे. वी कैन नॉट स्टॉप देम. लेकिन फिर भी वो बोलते हैं कि योग यानी चित्त वृत्ति का निरोध. तो मैं पूछती थी खुद को, क्या पतंजलि जी को मालूम नहीं है कि ब्रह्मांड तो चलते ही रहने वाला है, ये वाइब्रेशंस आर गोइंग टू रिमेन. हाउ कैन वी स्टॉप दिस वाइब्रेशंस? हाउ कैन वी स्टॉप दिस वाइब्रेशंस? तो इस पे जब ये चित्तवृत्ति निरोध पे जब संयम किया, that is the regression therapy. Okay, we go in the past and everybody of us we carry everything within us. Okay, तो past life में किसी जाने के बाद, like in a past life I have met Patanjali. तो पतंजलि जी ने वो लाइफ टाइम में मुझे सब सिखाया था ये कैसे. लेकिन यहाँ तो सूत्र रूप में ही है, जैसे मैं पीपीटी कर रही हूँ अभी. So we just write the points in the PPT. We don't elaborate the points. The actual lecture में वो elaborate होते हैं, और एक एक साल, दो साल गुरु के साथ रहने के बाद वो पॉइंट्स समझ में आने लगते हैं. तो 12 साल तक उसकी साधना करने के बाद गुरु के साथ, क्योंकि जो मिस्टेक है वो एप्लीकेशन करते समय गुरु ही बोलते जाएंगे कि ये कैसे एप्लीकेशन करना है, क्या करना है, हाउ टू यूज इट इन योर लाइफ. So it is a sadhana by itself. Okay, so it is about vibrations. So vibrations निरोध कर सकते हैं क्या हम? हाँ, कर सकते हैं. कैसे निरोध करेंगे? ये जड़ देह है, हाँ, जो सांख्य फिलोसफी पूरी बोलती है. हाँ, तमस, what is the equilibrium between tamas and rajas, और sattva has to be in a very balanced form. तो हम ये कर सकते हैं क्या? रजस कम करना है और सत्व थोड़ा बढ़ाना है, क्योंकि सत्व हमारा कम है, रजस थोड़ा कम करना है, सत्व थोड़ा बढ़ाना है. ये हम कर सकते हैं क्या? हाँ, ये हम करने लगेंगे तो वृत्तियों का निरोध संभव है. बिकॉज वी स्टार्ट गेटिंग एलिवेटेड फ्रॉम दिस जड़ देह, क्योंकि हमारा मनोदेह, बुद्धि कोश, तो दे डोंट हैव दिस अर्थ का पुल, उसको नहीं है. मैग्नेटिक पुल जो है अर्थ एलिमेंट का, वो ये एलिमेंट्स को पुल नहीं है. स्पेस एलिमेंट को तो बिल्कुल नहीं है. सो व्हेन वी स्टार्ट एलिवेटिंग आवरसेल्व्स फ्रॉम द अर्थ, जड़ से हम ऊपर जाने लगते हैं, सूक्ष्म में जाने लगते हैं. तो लाइक वी कैन हैव अ एरियल व्यू, सैटेलाइट व्यू. सैटेलाइट से नहीं तो विमान से अगर हम देखेंगे पृथ्वी को, तो समुद्र में कितने भी सुनामी भी आए, विमान में उसको, इट इज अ रिस्ट्रेंट ऑफ ऑल द वृत्ति इज हैपनिंग इन द सी बिलो. तो हम ऊपर उठेंगे तो वो जो ब्रह्मांड में वृत्तियां चल रही है, उसका हमें कोई लेना देना नहीं होगा. तो समष्टि में तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे खुद के अंदर की जो साधना है वहां हम जरूर कर सकते हैं कि समष्टि वाले जो वृत्ति है उससे हम ऊपर उठेंगे. ये एलिवेट आवरसेल्व्स. कौन सी सीढ़े से? तंत्र शास्त्र बोलता है कि हमारी सुषुम्ना से ऊपर उठना है. तो एग्जैक्टली फ्रॉम द मिडल, समत्व, एग्जैक्टली बैलेंस्ड. तो वो ऐसे हम उठेंगे ऊपर, तो हम ऊपर से देखेंगे तो हमें ये सीढ़ियों का कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये वृत्तियों का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. और जो सांख्य में तीनों क्लेश बोले हैं,
सांख्य के आदि भौतिक, आदि दैविक एंड आदि आत्मिक, because this is a presumption for yoga, what Patanjali say. So ये किसी का भी हम पे असर कुछ नहीं होगा. We will be free from that. Okay. So the five vrittis are pramana, viparya, vikalpa, nidra and smruti. It is one of the most important vrittis. So we know real perception, wrong perception, imaginary knowledge, dreamless sleep, memory are the 5 types of vibration patterns. So पतंजलि जी ने अक्नॉलेज किया है कि स्मृति पे काम करना है, क्योंकि ये वृत्ति है और ये वृत्तियां निकालनी है, कम करनी है. वी हैव टू वर्क ऑन दीज वृत्तिस. तो ही हैज श्योरली, अगर वो सूत्र में बोलते हैं तो उनके जो शिष्य होंगे उनसे उन्होंने करवा लिया होगा ना ये जो सब है. सो इन अनदर वर्स स्मृति के बारे में वो बोलते हैं कि अनुभूत विषय और संप्रमोश स्मृति, नॉट अलाउिंग द एक्सपीरियंस ऑफ द ऑब्जेक्ट और इंसिडेंस टू एस्केप फ्रॉम द चित्त इज कॉल्ड मेमोरी. ये जो पिक्चर में दिख रहा है, हम मेमोरी स्टोर करते जाते हैं. वी डोंट लेट गो एनी मेमोरी. हमारी ये नेचुरल वृत्ति है. जैसे हमने बोला ना कि जड़ देह है, इट हैज अ मैग्नेटिक फोर्स. इट इज अ वेरी नेचुरल मैग्नेटिक फोर्स कि वो वृत्तियां संस्कार रूप में ढाल देता है हमारे कहाँ पे, डीएनए में, हमारे इस जड़ देह में, हमारे चित्त में वो ढाल देता है. एंड दे कम फ्रॉम, बाहर से आती है वो वृत्तियां जो है, बाहर से अंदर जाती है. एंड दे get stuck up in our systems as a sanskaras. तो उसे ही स्मृति कहा है. नॉट तो वो बाहर निकलने नहीं देती. they don't allow the chitta to work, move forward in life. they keep on pulling you back, pulling you back, pulling you back. क्योंकि everybody, ये जो पैटर्न दिख रहा है, लूप जैसा फॉर्म होता है, तो स्मृतियों का लूप जैसा फॉर्म होता है. तो बाहर निकलने भी जाएंगे तो इफ यू कैन सी माय फिंगर्स, जैसे कि ये वृत्ति है, हम ऐसे बाहर में निकलने भी जाएंगे. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर एट दिस पॉइंट वेयर वी कैन गो टेंजेंट एंड गो आउट, इफ वी आर नॉट अवेयर एट दैट मोमेंट, वी टेंड टू कम बैक. क्योंकि ये अर्थ का जो पुल है, जड़ देह का जो पुल है, इट विल ब्रिंग यू बैक. सो अवेयरनेस, मेडिटेटिवनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट when we work on any of the vrittis, including smriti. Now Patanjali has talked about smriti parishuddhi. Smriti parishuddha swarupa shunya iva arthamatra nirbhasa nirvitarka. Let us not talk about nirvitarka or something, but smriti parishuddhi करने के बाद हम we can transform our thought patterns. Means एक स्मृति एट अ टाइम, वी हैव टू वर्क ऑन वन स्मृति. तो ऐसा एक करके हम स्मृति की परिशुद्धि कर सकते हैं. इसलिए महावीर जी और गौतम बुद्ध जी के आश्रम में उनके शिष्य रोज जाति स्मरण करते थे, रोज. बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन ऑल द मेमोरीज एंड रिमूव इट्स अटैचमेंट्स. और मेमोरीज के अटैचमेंट्स जब हम रिमूव करेंगे, एसोसिएशन, वी नो हाउ वी मेमोराइज. कि मेमोरी मेमोराइज करने के लिए हम लेबल्स लगाते हैं, एसोसिएशन के लेबल्स लगाते हैं, इमोशंस के लेबल्स लगाते हैं, लॉजिक के लेबल्स लगाते हैं. पिक्चर जो हम मेमोराइज करने वाले हैं, या एखाद ऑडियो है वो मेमोराइज करने वाले हैं, तो वी राइट द नेम ऑन इट. ओके, हमारे यहाँ भी कुछ सीडीज है, हमारी फाइल्स है, वी नेम द फाइल्स, और वो स्मृति में आ जाती है. इफ वी डोंट नेम द फाइल्स, व्हाट विल हैपन, हम वो सब निकाल देंगे, नेम्स निकाल देंगे फाइल्स के, देन इट डजंट हैव एनी मीनिंग इन आवर लाइफ. तो थॉट ट्रांसफॉर्मेशन इमीडिएट हो सकता है.
because the perspective change will happen automatically, and this is what we have to work on. Every memory, purification of memories, it should be memories, because there are thousands and thousands and millions and billions of memories which are collected in our body. So we have to remove all of them. So we have to keep on working on all of them. और बाद में सॉरी दूसरे अध्याय में पतंजलि जी वो साधना कैसी करनी है वो बोलते हैं कि ये जो समाधि है, पहले पाद में जो बोला है, ये जो समाधि है अभी उसकी साधना कैसे करेंगे वो मैं बोलता हूँ. स्मृति परिशुद्धि करनी है ऐसा बोला, लेकिन साधना उधर नहीं बोली है, साधना इस पाद में बोली. तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, क्लेशा, क्लेश तनु करने हैं तो क्रिया योग बोला है. तो don't, it is not mentioned in Patanjal Yoga Sutras. You will have to believe in me, trust me that I am telling the truth. लेकिन जब मैंने बोला ना चैनलिंग किया मैंने, एंड मैंने उनको पूछा क्या क्रिया योग में आप रिग्रेशन थेरेपी लेते थे? And he said, of course, without regression therapy, how is it possible to work on memories? Memories पे काम करना है तो रिग्रेशन थेरेपी चाहिए ही चाहिए. और जैसे प्रतिप्रसव प्रक्रिया बोली है ना, we have to, क्लेशास की जैसे प्रतिप्रसव प्रक्रिया है, वैसे ही प्रमाण भी निकाल देने हैं अगर, वो स्मृति से ही शुरू करने पड़ेंगे. We work first on स्मृतिज, and till the end, even till the pramanas, we keep on working on smritis only, because बाकी के जो है they don't have anything we can hold on to, लेकिन smritis we can surely hold on to. तो वो जो hold कर सकते हैं उससे ही काम करवा लेना है. तो masters have told several times in sometimes in dreams and sometimes in these channeling sessions that मैं पूछती थी, बिकॉज एवरी टाइम मुझे इसके संदर्भ कहीं पे नहीं मिलते हैं ना हमारे जो सब एंशिएंट स्क्रिप्चर्स है, कि मुझे लगता है कि पतंजलि लेते थे पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये सब मुनिजन है, गुरुजन है, वो सब पास्ट लाइफ रिग्रेशन लेते थे ऐसा मुझे लगता है. सो आई आस्क्ड देम वेदर मुझे जो लगता है वो राइट है या रॉन्ग है. तो every time they have assured me that you are absolutely right, though we have not written. Why they have not written? Because that time it was not a necessary factor to write it down. क्योंकि उस टाइम पे खाली मानना नहीं था. People used to act, the lifestyle was according to what is needed as to do in lifestyle changes. When we do a past life regression, those things were happening naturally to them because they were living a lifestyle through trust, through total trust of past life, through total trust of. इसलिए यम नियम का पालन हम आज कर रहे हैं, उससे बहुत ही ज्यादा यम नियमों का पालन होता था उस 1000-2000 years के पहले का मैं बोल रही हूँ. But now it has become a necessity कि अभी वो हो नहीं रहा है, and now we cannot go back to that level. Okay, we have grown up. हमारा पूरा समाज ग्रोन अप हो गया है. वी हैव डेवलप्ड आवर लेफ्ट ब्रेन. तो लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा वो ट्रस्ट वाला ब्रेन नहीं है. इट विल कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चंस 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 क्वेश्चन. वो क्वेश्चन तो खत्म ही नहीं होंगे. एंड वी हैव टोटली लॉस्ट ट्रस्ट. वी हैव टोटली लॉस्ट ट्रस्ट इवन विद इन अस. तो अभी इट इज वेरी नेसेसरी दैट वी डू अ रिग्रेशन and understand कि हमारे past lives में हमने क्या किया था. तो and we can go through all these changes through past life regression. तो ये जो पांच क्लेश है वो क्रिया योग में रिग्रेशन थेरेपी वाज यूज्ड. खाली प्राणायाम और आसन प्राणायाम और जो हठ योग है खाली वही नहीं, लेकिन regression therapy was equally used as a part of Kriya Yoga in those past times. Okay,
And so he has told about Pratiprasav, Heya Sukshma. We have to reverse the flow of energy. How can we do it? We can reverse the flow of energy. क्योंकि वो ये जो स्मृतियां है ना, ये स्मृतियां बाहर से कुछ भी सिमिलर रेजोनेटिंग फैक्टर्स आ जाते हैं. एंगर इज स्टोर्ड सपोज इन माय मेमोरी, ओके, और बाहर से कोई एंगर जैसा सिचुएशन आ जाता है, तो लॉ ऑफ रेजोनेंस से क्या हो जाता है, मेरे अंदर का एंगर ट्रिगर हो जाता है. तो दैट मेमोरी व्हेन इट गेट्स ट्रिगर्ड बाय आउटर एक्सपीरियंसेस, और बाहर में जो ब्रह्मांड में हो रहा है, भौतिक जगत में जो हो रहा है, उससे जब वो ट्रिगर होगी, वो फटाफट बाहर निकलनी शुरू होगी. सो इट विल हैव अ फ्लो आउटसाइड, बाहर आ जाएगी. एंग्रीली आई विल जस्ट बर्स्ट आउट, जैसे स्फोट होगा वैसे कुछ होना शुरू हो जाएगा जस्ट बाय ट्रिगरिंग इट. तो हमें क्या करना है, अवेयर रह के प्रतिप्रसव मेडिटेटिवली ही करनी है. So what we do, Osho used to tell, just watch your anger. Don't do anything about it, but surely watch your anger. हम anger watch करते जाएंगे तो अपने आप में वो शांत हो जाएगा, क्योंकि हम उसको एनर्जी ही नहीं देंगे एंगर को. then the reverse flow will start automatically. reverse flow शुरू हो जाता है and the anger subsides. reverse flow जो हमारा अवेयरनेस है, जो सत्व भाव है, अवेयरनेस इज सत्व भाव, मेडिटेशन इज सत्व भाव. तो सत्व भाव से हम देखते हैं खाली उस एंगर को, तो वो एंगर का जो सब निगेटिव रजस भाग है वो शम जाता है. मराठी में एक अभंग है, कापुराची वाती उजळली ज्योती, ठाईचं समाप्ती झाली तशी. So that memory, that anger, that part of that memory, they get sublimated automatically, and this is what happens in Pratiprasav Prakriya. But we have to be very much meditative in every action when we are doing this. Like Klesha Mula Karmashayo Dushta Dushta Janma Vedaniyah. The root cause which lies in the Karmashaya, we experience it in the दुष्टा दुष्ट में. बुक्स में कहा है कि see present and future, but I also feel that is also one of the meanings, but surely I also feel कि दृष्ट और अदृष्ट हम बोलते हैं, तो ज्यादातर हमारे अंदर अदृष्ट ही होता है. we are not aware of what is lying to burst out with inside us. हमारे अंदर के लेयर्स हमने कभी जांचे ही नहीं. इसलिए गौतम बुद्ध जी ने कायोपासना बोला है ना, काया विपश्यना. तो विपश्यना काया पे हमने करना चाहिए, क्योंकि व्हेन वी ब्रिंग दिस बॉडी, हमने डीएनए के स्वरूप में, ग्रंथियों के स्वरूप में वो सब ढाला है. इट इज ऑल अनसीन, वो हम देख नहीं सकते हैं. तो ये प्रेजेंट का भी अनसीन बहुत है, फ्यूचर का तो है ही अनसीन, लेकिन प्रेजेंट में भी अनसीन बहुत कुछ है. तो वी हैव टू वर्क ऑन दिस कर्माशयास. व्हेन ही इज सेइंग कि ये अनसीन है, तो ही डजंट जस्ट मीन टू से दैट अनसीन है, ठीक है स्टेटमेंट कर लिया, अभी कुछ नहीं करो, एक जान लिया नहीं. दैट मीन्स ही इज सेइंग कि इस पे काम करना है. हेय दुखम अनागतम, दैट इज व्हाई ही इज सेइंग दिस, कि हम आगे आने वाला जो दुख है वो एलिमिनेट कर सकते हैं इफ वी वर्क ऑन these पॉइंट्स. और विभूति पाद में ये कहा है, विभूतिज आर सिद्धीज, विभूतिज आर स्किल्स, थर्ड आई स्किल्स, एक्स्ट्रा परसेप्शन, सेंसरी परसेप्शन जिसको बोलते हैं, वो सब विभूतियां है. वेरी मच ह्यूमन कैन रीच टू दोज लेवल्स, एंड दोज आर, बाद में उन्होंने अगर कहा भी है कि वी शुड नॉट गेट स्टक अप इन दिस बिकॉज दीज आर वेरी अट्रैक्टिव.
attractive है, so we may get stuck up in these siddhis, but उन्होंने कहा है इसका विनियोग करना है. विनियोग किस लिए करना है? जैसे कि ज्ञानेश्वर माउली ने चांगदेव जी का गर्वहरण करने के लिए वो भिंत चलाई थी, द वॉल, उन्होंने सिद्धि का उपयोग किया है, लेकिन फॉर अ वेरी गुड एंड अ वेरी स्पिरिचुअल कॉज यू आर अलाउड टू यूज दिस सिद्धीज. और पतंजलि जी ने बोला है, इसलिए तो इतने सिद्धियों का वर्णन है. उन्होंने बोला है कि ये सिद्धियों का उपयोग करना, क्योंकि ये पास्ट लाइफ संचित हमें खाली करना है ना, निर्बीज तक लेके जाना है खुद को. तो निर्बीज कैसे होंगे अगर संचित ये कर्मा से पूरा कम नहीं होगा? अगर ये संस्कार पूरे निकल नहीं जाएंगे तो हम निर्बीज पे कैसे जा सकते हैं? सो वी हैव टू यूज दीज आर द स्किल्स जिसमें गति थर्ड आई लेवल की है, आज्ञा चक्र की गति है इसमें. तो जैसे कि हम लाइट की गति बोलते हैं ना, तो लाइट की गति से हम ये काम कर सकते हैं. थर्ड आई है, वो थर्ड आई की गति है, वो इट इज लाइट, प्योर लाइट. तो लाइट की गति से हम काम कर सकते हैं, ऐसी हमारी मनुष्यों की क्षमता है. लेकिन हमने साधना करके वो सिद्धियां पानी है, एंड वी हैव टू यूज इट फॉर अ स्पिरिचुअल कॉज एंड स्पिरिचुअल कॉज ओनली. सो संस्कार साक्षात्करणात् पूर्व जाति ज्ञानम. By doing संयम on the manifested form of latent impressions of past karmas, knowledge of earlier lives is obtained. परिग्रह का भी जब बोला है तो परिग्रह में भी बोला है कि परिग्रह हम जब करेंगे when it comes to its fullest form of अपरिग्रह, तो अपरिग्रह के बाद भी हमारे जाति why we are born, what is my life purpose, what is my life agenda, जन्म की प्रक्रिया कैसे है, ये सब हमें समझ में आ सकता है, ऐसा अपरिग्रह का फल बोला है. एंड यहाँ भी वही बोल रहे हैं कि पास्ट लाइफ कर्मस, अगर एक एक इशू पे हम काम करेंगे, जो भी आज का हमारा प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम पे अगर हम काम करेंगे तो इट कनेक्ट्स अस टू आवर पास्ट लाइफ. संयम करेंगे तो और वो पूरी जाति का हमें ज्ञान हो जाता है. Why we are born, this life purpose, our life agenda, पिछले वो जन्म से हम ये जन्म में क्या लेके आए हैं, क्या पिछले जन्म में हमने क्या गलतियां की थी जो ये जन्म में हमें नहीं करनी है, ये सब ज्ञान और इससे भी ज्यादा ज्ञान हमें मिल जाता है. so that we don't perform do the same mistakes again and again. क्योंकि गौतम बुद्ध जी के कहानियों में भी बहुत है ऐसे कि he used to show his disciples कि पास्ट लाइफ में भी ऐसे तुमने किया है, कितने अभी ये जन्म में भी करोगे, वैसे ही भूल चूक करोगे ना. प्लीज स्टॉप डूइंग ऑल दिस. 10 लाइफ टाइम्स में हमने किया है, 20-25 लाइफ टाइम्स में हम गलतियां ही करते आ रहे हैं. आर वी गोइंग टू रिपीट इट? प्लीज डोंट डू इट. इसलिए पास्ट लाइफ देखने जरूरी है कि वी हैव बीन repeating these patterns of galtiya of again and again and again. So we have to stop doing it. At least at one point of time we have to become decisive and refrain from doing these mistakes. So this is a very important thing that we iska viniyog karna hai. Regression therapy is also like a siddhi only. And so I would like to stop here. And if there are any questions, I have more slides, but I would like to stop here. And if there are any questions, questions are welcome, I think, if time permits, of course.